वीर, एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। बहुत ही सुंदर। Welcome to Beer, where mornings feel slower and happiness feels a little more real. A warm sunrise is almost feels like that's what all you need. It also may be just a quiet cup of coffee and a really good book. This trip wasn't planned, without any itineraries or rush, just the intention to pause and explore and simply be, finding gratitude in smaller moments, not the big ones. And that's what I will take you along through all of this. सामने से पैराग्लाइडर्स इसे ग्लाइड कर रहे हैं and morning 6:30 I saw the first ones coming before the sunrise. 6:30 around they were just gliding down the highest peak up there, very confident and so rightly just flying. मतलब मैं तो imagine ही कर रही हूँ how it might be feeling just flying like a bird. Yeah, someday when I'm more mentally prepared of doing that. But for now, let's enjoy the cool breeze. Started my day around 11 a.m. It has been quite a slow morning. The purpose was entirely just to slow down, and Bhir is one of those places which will actually make you slow down. It's a debit colony, so यहाँ पे cafe culture uh, बहुत अच्छा है. You can find lot of cafes at the town. The coffee here is amazing. I've seen that in McLeodganj and Dharamshala also. The coffee quality, the aesthetics, and even the cafe vibes are on point. सब कुछ बहुत अच्छा है. So I've started my day today with the cafe that I've come to is Garden Cafe. So it is amidst a garden, orange के पेड़ हैं, there are a lot of plants, and I've ordered their special pancakes, which probably should come up with a lot of fruits. Had a coffee and ordered some sandwiches as well. So let's see. We've come to Chokling Monastery in Beer and यहाँ पे monks जो है they live, study Tibetan culture, Buddhism as well. And यहाँ पे आप आ सकते हो morning 6 a.m. से evening तक. It's quite peaceful. It is following one of the Nyingmea. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. Nyingmea. So this is the Chokling Monastery behind me. काफ़ी peaceful environment है यहाँ का. And there are monks living around. हम लोग अराउंड 12 आए हैं. सो अभी प्रेयर्स नहीं हो रही बट यू कैन कम हेयर मेडिटेट अटेंड द प्रेयर्स एंड चांट्स बाय द बुद्धिज्म बाय द बुद्धिस्ट monks. And what else to say? It looks pretty serene. It has beautiful vibrant colors. And yes, that is it. I don't know much about it, but yes, looks and feels very peaceful. So ये चीज़ तो है, जितनी भी monasteries में गई हूँ, चाहे वो बीर की हो, anywhere in McLeodganj or any other country also, they're very peaceful. They have that aura of positivity attracting and letting you be there, just sit and meditate. So that's one thing, that's a common thing amongst all the monasteries. बेस्ट टाइम एंड द थिंग टू ट्रैवल इन स्प्रिंग इज़ आपको मतलब चलते चलते इतने सुंदर फ्लावर्स और एकदम ऐसे फुल फ्लावरी मोड दिखता है हर जगह. रियली लाइक दिस विला. इन्होंने पूरा ऐसे कवर किया हुआ है फ्लावर्स से. एंड someday definitely I would want that vibe at my home. It looks so pretty. Very nice. Beer naturally has a slow life, so you would want to sit and relax, and so was my plan. I was fervently craving a coffee, and I found this cafe nestled in around mountains, the Pahadi Cafe, to get going with my day.
Time to head to the landing site again, the favorite spot to watch sunsets or even just chill. So let's go and see the paragliders glide down and see their expressions. That's most thrilling thing to just to watch and observe. स्टिल अभी यहाँ पे एक्चुअल पैराग्लाइडर्स को अपने पीछे देख के जो सब लैंडिंग जोन में लैंड हो रहे हैं देख के बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है और अच्छी भी कि लोगों में कितने गट्स हैं, लोग इतने इंस्पायर एडवेंचरस एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं एंड द लैंडिंग साइट लुक्स प्रिटी फुल। आप देखोगे पीछे से द पीपल स्टार्ट कमिंग एंड वो यहाँ पे लैंड हो रहे हैं एंड बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है सनसेट। सो इधर से सनसेट हो रहा है एंड इधर से मून राइज हो रहा है पीछे। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज इट। इट्स डोप एक्चुअली। भी हम आए हैं तिब्बतन खाना खाने। बहुत ही लोकल सी जगह है यहाँ पे, टेंजिन्स किचन। वहाँ पे तिब्बतन क्यूजीन ट्राई करने वाले हैं एंड आई एम गोना राइट डाउन मैं क्या खाने वाली हूँ। सो मुझे एक टोफू मोमोज तो लेने ही है, टोफू और मे बी पालक चीज मोमोज उसमें से कुछ। एंड देन वी आर टेकिंग ऑफ हैविंग थेंथुक। थेंथुक इज बेसिकली पुल्ड नूडल्स इन सूप, छोटी छोटी शेप्स में होते हैं, या थुक्का टाइप कुछ चीज़ लेंगे जो कि काफ़ी हार्टी होता है एंड इस टाइम पे खाने में भी मज़ा आएगा। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल एकदम लोकल्स दिख रहे हैं। अब मुझे लगता है इट्स टिबेटन्स फेवरेट। सो लेट्स सी हाउ द फूड टेस्ट। तो थोड़ा टाइम लग रहा है बट आई लव द फैक्ट दैट ये जो जगह है किसी ने अपने घर में बनाया हुआ है। तो अगर आप देखो तो इट इज़ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे बैल्कनी में हम लोग बैठे हुए हैं, रूम्स में भी बनाया हुआ है। बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आप किसी के घर में बैठ के खाना खा रहे हो, एकदम लोकल टिबेटन खाना, सोच के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जनरली बड़ी सिटीज़ में ऐसे मिलता नहीं है। सो वेटिंग फॉर द फूड एंड एक्साइटेड टू टेस्ट इट। One, two more. थैंक यू। More. Okay, okay. Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. मजा आ गया है। सबसे अच्छा अहमदाची मशरूम वाला शामादाशी या व्हाटएवर, पोटैटो पोटैटो। अच्छा लगा। Good morning, YouTube. It's a bright new day in Beer, and the sun is rising just behind the camera. I woke up at 6:30 in the morning, and it feels beautiful, so lively to be up at that point in time. थोड़ा ठंड थी उस time पे, but now a sun is rising. The rays are just hitting my face, and it feels unreal. This feeling is something I cannot express. That's the slow morning I love about coming to mountains and just being, or maybe going anywhere, not even mountains. It's just going through a book, which is The Mountain Is You, and it talks about how people in your life influence the personality that you eventually become, and that's how it's important to have and choose people wisely you want around, because ultimately they are the ones who will impact your life the most. So choose wisely. And yes, that's what I wanted to share as a morning thought for now. Look how beautiful the skies are.
दीदी आप बीर में कब से हो? बीर में कब से हो? हाँ। हमको हो गया कोई 1 महीना के अच्छा, आप कहाँ से हो वैसे? संसार से। अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ अच्छा लगता है, रात का काम हमारे को अच्छा लगता है। ये वाला फूल कितना सुंदर है ना, ये ऑरेंज वाला। हाँ जी ये कौन सा पौधा है? पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे तो पता नहीं है। पर बहुत अच्छा है, सुंदर है, सारे ही सभी सुंदर है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है एंड आज आई डिसाइडेड टू हैव दैट इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ जहाँ हम रुके हुए हैं. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट आई एम स्टेइंग इन एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी रीजनेबली प्राइस्ड. तो आज यहाँ ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं कैसा होता है. एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि स्टार्टिंग में आई नेवर, व्हेन आई वाज like 5-6 years पहले, I never used to travel alone, or maybe I needed company and sort of things. I just didn't wanted to get out of my comfort zone at all. But times change and I realized that now it's okay. If I get company, well and good. अगर नहीं भी है तो I just don't need it. I don't think so I need it because it's nice to be on your own also sometimes. And I'm thinking of taking those swings. मन कर रहा है उन पे झूला झूलने का, so probably we'll do that for now. How when I come to mountains, my perspective and my mind overall just slows down. Like there's no overthinking. I'm not thinking too much. I'm not procrastinating. I just didn't have the constant urge of being productive all the time, you know. And even I'm just too in the present. That's something I love about me being somewhere close to nature, because what I believe is as close I am to clear blue skies or greenery or nature, I feel more connected to universe. And that's my idea of spiritual awakening. And as I'm just growing up, I've realized this, how important it is for me to take a break of such kind. And now eventually I realize it's not something related to just mountains. It is related to the peace and the mental stability I feel, and how as a person I evolve when I take these kind of breaks. And yes, that was just a little rant on what I felt and why just moving out of city is so important in like a month or so for me. And I'm glad that I'm very grateful that the connectivity is so good that I'm able to do that in a span of 3 to 4 days when I'm just not working. We're finally ready to go back and हमारी बस है but वो थोड़ा लेट चलेगी. So waiting at a cafe and I'm just doing some of the work here. So I wanted to share one incident. I ordered for tea and initially I told just to put a very little sugar in the tea. The people of Himachal are so generous and so sweet. I cannot even stop, just cannot even explain how sweet they are. It was a bit sugary for me, so I didn't drank. And the guy came and said, "Ma'am, aapne peeni?" And then I was like, "Ki because it was a bit, it had some sugar." So he just came back and with another cup of tea without sugar, and that's amazing. And he didn't even ask for it. Can you believe it? Do you even get this kind of generosity, and how sweet the people are for the people or for tourists especially? I am just, my heart is full and I wanted to share that. And also an update, the work and life is sometimes needing to be balanced. So yes,
this is the current situation. Not only my life looks very flowy that I'm traveling, I'm also working in between. So let's go back to Gurgaon now and let's see कैसा रहता है रास्ते का सफ़र. आई थिंक ठीक ही होगा. ओवरनाइट जर्नी है. सुबह पहुंच जाएंगे हम 5:30. A little bit of background noise because मैंने headphones नहीं लगाया हुआ है. No information you need. But yes, I'm ranting. Bye bye.